सभी को मेरा नमस्कार. Greetings to everyone. Here is an interesting question from Standard 12 on indefinite integrals. This is a JEE Mains question, but irrespective of whether it's a JEE Mains question or not, ये question मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा and I thought of making a video on it. It is because although looking at this question it looks a little bit overwhelming और थोड़ा बड़ा सा question लगता है indefinite integrals का, but इतना complicated नहीं है. और कुछ की कॉन्सेप्ट्स कवर करता है जैसे कि हाउ डू यू सब्स्टिट्यूट a differential and how do you integrate terms which has x4 in the denominator. So some of those concepts are getting covered and because of that I thought of making this video. So let's get straight into the problem. The problem is you have been given an indefinite integral and you have also been stated what it would resolve into when you know do the integration, and you have been given some some variable terms alpha, beta, gamma and lambda. I wouldn't say variables, I would say some constants are there in the indefinite integrals solution. और आपको अल्फा बीटा गामा और लैम्डा की वैल्यू निकाल के आपसे पूछा गया है कि 10 अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर होगी. So basically, we have to solve the indefinite integral on our own and then see whether the terms in our solution are appearing as the one that is given in the question on the right hand side of the equation, and find the corresponding values for alpha, beta, gamma, and lambda. So let's get straight to the problem, and then see where we go from there. So we have been given the problem as x square minus 1 plus tan inverse x square plus 1 on x dx and x4 plus 3x square plus 1 and then times tan inverse x square plus 1 upon x. Here, the first thing that came to my mind was to think about something which I can substitute for dx, right? Whether any of the terms in this indefinite integral has also a term within the indefinite integral which is a differentiated value of that term. तो मैंने अगर आप tan inverse x square plus 1 upon x को, let's say I consider this as y. Okay. Now let's differentiate this, right? So if you differentiate this with respect to x, what you'll have to do is, tan inverse, let's say p and d on dp we know is 1 upon p square plus 1. This is just a side definition of differentiation of tan inverse. So what I would do is if I have to differentiate tan inverse x square plus 1 upon x, which I'll put it like this, tan inverse x square plus 1 upon x. So let's say I differentiate it with respect to x. I do dy upon dx is equal to 1 upon x square plus 1 upon x whole square plus 1. And then I'll once again differentiate x square plus 1 upon x with respect to x. Okay. So if we do that, we will get this expression would become, you would open the, हम ये ब्रैकेट को खोलना पड़ेगा हमें, नीचे ये x स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा. इधर अलग से डिफरेंशिएशन करते हैं और मैं इस क्वेश्चन में अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन आता है क्योंकि थोड़ा सा हायर ऑर्डर क्वेश्चन है. तो आई एम श्योर दोज हु वुड सर्च फॉर दिस वीडियो would already know basic level of integration and differentiation. So here it would become x square and then we would put x here and then
this term, the numerator would get differentiated as 2x, and then 1 would be 0, and then we would put x square plus 1, and then this x would get differentiated, and that value would be 1. Okay, so dy upon dx would then become, we will open this whole square bracket, it would be x4 plus 1 plus 2x square on x square plus 1. And then this one we would open, it would become 2x square minus x square minus 1 x square. So I'll just show this to you once again. I'll just zoom out a little bit. So let's solve this further. We'll have dy upon dx. This term becomes x4 plus 1 plus 2x square plus x square on x square. And this term actually becomes x square minus 1 upon x square. If I solve this a little bit further, we get dy upon dx. This becomes x square upon x4 plus 3x square, x4 plus 3x square plus 1. And then you have x square minus 1 upon x square. So actually this x square gets cancelled out. So I'll go to the next page. I just want you to have a close look at this page. What I can already see is that one of the terms x square upon x4 plus 3x square plus 1 has already appeared in my dy by dx differentiation, which is a very positive thing. So I'll come here and my dy by dx becomes x square minus 1 x4 plus 3x square plus 1, which means dy can be written as dx square dx x4 plus 3x square plus 1. Now, if I go back to my original problem, which was my integration, I'll just write that down again. X square minus 1 plus tan inverse x square plus 1 on x dx on x4 plus 3x square plus 1 tan inverse x square plus 1 upon x. So if you see there is a plus sign here. So I can just split this integration into two terms. One is x square minus 1 dx x4 plus 3x square plus 1 tan inverse x square plus 1 upon x, right? And then the second term would become tan inverse x square plus 1 upon x x4 plus 3x square plus 1, and then tan inverse x square plus 1 upon x. If you would see these two, and then there is a dx here, these two terms would get cancelled out. And here we know that the differentiation of tan x square plus 1 upon x with respect to x is actually x square minus 1. So if I can make this whole term as dy upon y. And this term now is x square plus x4 plus 3x square plus 1. Okay. So what we can do now is, this one is very simple now. It becomes log e y. Okay. And then this one we'll have to use a little bit of trick. And this is this differentiation you would have done in many questions. काफी questions में आप करते होंगे इसको, जहाँ x4 की term होती है. यहाँ पे देखिए, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ. Half
2 dx x4 प्लस 3x² प्लस 1। और उसका रीजन आपको भी पता लगेगा अभी जब मैं इसको ऐसे करूंगा। ये log y मेरा था tan x² प्लस 1 अपॉन x, इसी को मैंने y माना था ना। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस x² प्लस 1 माइनस x²। जिन्होंने डिनोमिनेटर में x4 वाले टर्म्स की इंटीग्रेशंस सीखी है, और मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा उसके बारे में, उनको ये चीज़ पता होगी कि हमें न्यूमरेटर में 1 प्लस x² की टर्म लानी होती है ताकि हम उसको x+1/x या x-1/x की फॉर्म में ला सके। तो यहाँ पे मैंने एक 2 करके उसको 2 से ही डिवाइड कर दिया ताकि देर इज नो ओवरऑल नेट इम्पैक्ट ऑन दिस इंटीग्रेशन। एंड देन यहाँ पे मैंने अपनी तरफ से x² या -x² डाल दिया, बात वही रह जाती है। आपके ओरिजिनल एक्सप्रेशन में कुछ चेंज नहीं हो गया, बट आपके पास एक लेवरेज आ जाता है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ये हो गया। तो ये जो टर्म है ये तो मेरी इंटीग्रेट हो चुकी है, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x, राइट। और यहाँ पे मेरे पास एक टर्म ये हाफ ये आ जाता है 1 प्लस x² dx x4 प्लस 3x² प्लस 1। और मेरे पास एक और टर्म आ जाती है माइनस हाफ, नहीं माइनस हाफ नहीं है, प्लस ही रहेगा, बट ये आ जाएगा मेरा 1 माइनस x² dx। मैं चेक कर रहा हूँ कि मैं साइन की कोई गलती तो नहीं करानी, ठीक है। x4 प्लस 3x² प्लस 1, ठीक है। जब आपका ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी ना, तो देखिए यहाँ पे ना प्लस x² है, तो मैं देखिए इस टर्म को कैसे लिखता हूँ, log e tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x। इसको मुझे टच ही नहीं करना। और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ हाफ। देखो इसको मैं ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को x² से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x²। मतलब आप जब करोगे तो ये 1 अपॉन x² हो जाएगा और ये 1 होगा, उसको मैंने घुमा के लिख दिया, तो 1 प्लस 1 अपॉन x²। और ये मुझे हमारा हो जाएगा x² प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। और यहाँ पे आपके पास सेम, आप x² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो, हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, तो अब यहाँ पे एक साइन का वो आएगा क्योंकि ये हो जाएगा 1 अपॉन x², और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा आपका ब्रैकेट में dx, और नीचे x4 सॉरी x² प्लस 3 प्लस 1 अपॉन x², ठीक है। तो अब देखिए मैं एक लास्ट स्टेप लिखता हूँ, फिर हम एक न्यू पेज में जाएंगे। ये एक्सप्रेशन आपका हो गया log e tan इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x, राइट। और यहाँ पे चूंकि यहाँ प्लस x² है तो नीचे हम x माइनस 1x लेंगे, तो इसको हम करेंगे 1 प्लस 1 अपॉन x² dx। और इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो x² प्लस 1 अपॉन x² है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर। यानी ये अगर खुलता है तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x² -2। तो यहाँ पे एक -2 की टर्म आएगी, तो उसको निगेट करने के लिए मुझे यहाँ पे एक +2 डालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वो -2 तो हमें अपनी तरफ से डालना पड़ रहा है ताकि मैं होल स्क्वायर बना सकूं। तो यहाँ एक -2 आएगा तो मुझे +2 डालना पड़ेगा, तो +2 और ये 3 कितना हो जाएगा 5, ऑलराइट। और यहाँ पे मेरे को ये 1/2 की -1/2 की भी इस 1 को मैं यहाँ ले आऊंगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरा 1 माइनस 1 अपॉन x² dx ऑन। अब यहाँ पे मैं चूंकि
1 माइनस एक्स 1/x² है, तो मैं यहाँ करूँगा x प्लस 1/x², यहाँ आ जाएगा मेरा 1। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर मुझे x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करना है तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2, और वो 2 मैं इस 3 से ले आऊंगा तो यहाँ एक 1 बचेगा, राइट। I'll go to the next page. I want you to have a close look at this one, this whole step. Okay, so once you've taken a look at this, we'll go to the next page and we'll do log E tan inverse x² plus 1 upon x. And then my expression would become 1/2. I am just writing down the last step again on इस पेज के सबसे ऊपर मैं लिख रहा हूँ. x² plus 1. देखिए अब क्या हो जाएगा ना, ये इस थोड़ा और रिफाइंड मैनर में अगर मैं लिखूंगा log E tan इनवर्स x² plus 1, इसको मैं थोड़ा और रिफाइंड मैनर में लिखूंगा तो यहाँ पे मैं x माइनस 1/x को मैं यहाँ पे दो सब्सटीट्यूशंस लिख देता हूँ. मैं लिख देता हूँ लेट x माइनस 1/x इज इक्वल टू, लिख देता हूँ p, एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ लेट x प्लस 1/x इज इक्वल टू q. ठीक है, बट आपके यहाँ पे 5 भी है, तो tan इनवर्स की इंटीग्रेशन में अगर आपको इसको बदलना है तो आप इसको ऐसे करोगे. इनफैक्ट एक काम करते हैं, इस स्टेप को ना बाद में करते हैं. पहले मैं इस 5 को, जैसे यहाँ पे 1 है, आई एम नॉट वरीड हियर बट आई एम हियर लिटिल बिट वरीड हियर. Those who have practiced a lot on integrations would know what I'm talking about. यहाँ पे लिखेंगे and then I'll do 1/2. There is always a dx here. What I'll do is I'll bring this 5 out of the bracket, so it will become 1/x² dx. The 5 comes out. This whole term becomes 1/√5 x minus 1/x whole square plus 1. So plus 1. And then we already have minus 1/2. 1 minus 1/x square dx x plus 1/x square plus 1. All right. Now what I'll say is let 1/√5 x minus 1/x be p, and I'll also say let x plus 1/x be q. So 1 minus 1/x square dx actually becomes √5 dp, and 1, this is 1 plus, this is 1 minus 1/x square actually becomes dq. So your expressions now change like this: log E tan inverse x² plus 1 upon x plus half. This becomes your
root 5 dp. And this 5 actually comes and gets multiplied here. So it is 5 here. And then it's p square plus 1. And we have minus 1 by 2. This is dq, q square plus 1. So you actually get the final expression as log e tan inverse x square plus 1 upon x plus, see, this is a root 5 here and there is a 5 here. So I'll get, this will become 1.2 root 5 tan inverse 1 upon root 5 x minus 1 upon x minus 1 by 2 tan inverse x plus 1 upon x. All right. So your expression actually becomes tan inverse x square plus 1 upon x 1 upon 2 root 5 tan inverse 1 upon root 5 x square minus 1 upon x minus 1 by 2 tan inverse x square plus 1 upon x. So I'll bring the question back again and let's do a comparison of what I have finally arrived at with the coefficients. So if I go back to the original question that we had, I'll go back. And this is like kind of, thoda moment of truth type ho jata hai. Give me 1 second now. I'm trying to bring that question on screen. So we are here. So you see, there isn't, in the expression you would see there is alpha log e tan inverse x square plus 1. Now we actually do not have anything in front of alpha, so we can assume like in front of log e. So we can assume that it is actually alpha is equal to 1. Now the second term is beta tan inverse gamma x square minus 1 upon x. So if I compare the coefficients, beta actually is 2 upon root 5. All right. And if I compare, I'll just go back to the question. There is some mistake in the question, I feel, because there isn't anything in the lambda term. Give me 1 second. I'll check the book. I think there isn't any term called gamma in the fourth expression. Give me 1 second. Yeah, so my apologies. There is one term wrong in the question that I had shared earlier. I'll just correct it. I'll screen share again. So you see there is one change that I should have informed you earlier. This last term, lambda tan inverse, is only x square plus 1. There isn't any gamma inside that. So basically, if I say, look at that,
My beta is 2 upon root 5. My gamma is 1 upon root 5. And my lambda is minus 1 upon 2. Now we have been asked, give me 1 second, I'm just checking my camera if you can see everything. I'll stop sharing. And we have been asked in the question the value of tan alpha beta, tan alpha plus beta gamma plus lambda. So we have been asked tan alpha plus beta gamma plus lambda. This is the final question answer. So it is tan 1 plus 1 upon 2 root 5, 5, 5 minus 1 by 2. Basically, this becomes 10, 1 minus 1 by 2 plus 1 upon 2 root 5 into 5 is again 10. So our answer becomes 10, 1 by 2 plus 1 by 10. It becomes 10 by 2 plus 1. It becomes 5 plus 1, 6. So the final answer to the question is 6. Yeah, my apologies that there was one mistake in the question in the first slide that I have shown you, that in the fourth expression on the right hand side वो एक एडिशनल गामा था जिसको हमने बाद में चेंज किया, बिकॉज जब मैंने सोल्यूशन निकाला तो मुझे कुछ गड़बड़ लगी कि वो नहीं होना चाहिए था वहां पे। फिर मैंने बुक से चेक किया तो वो नहीं था एक्सप्रेशन। आंसर मैंने अभी चेक किया, क्वेश्चन का आंसर तो बिल्कुल हमने ठीक निकाला है, इसको ऐसे ही करना है। But yeah, this wasn't a very clean video, I know, because it was a long integration question. But I'll still upload it because we are creating a series of host of videos. I'm sure I'll refine this once again. Thank you for watching, and keep uh, tuning into my channel. Thank you.